Mumbai by the Mumbai police, but he was he was let off after being strictly questioned. If the Mumbai police had established contact with the Delhi police during that time, then perhaps we would have seen this investigation happening much before. Remember that the reason that we're struggling right now to get any sort of evidence against Aftab is because this crime was committed 6 months ago. Now, the Mumbai police, it looks like, failed in their duty of going ahead and contacting the Delhi police the moment the missing report was filed, especially when they knew that Shraddha was sitting in Delhi. Immediately, they should have reached out to the Delhi police. They didn't do that. So 2020 letter ignored, 2022 September complaint ignored, right up until November 9th is when finally Mumbai cops reached out to the Delhi police. Arvind Ojha is joining us with more details on this. So Arvind, another big lapse that's been reported as far as the Mumbai cops are concerned. हमको ये जानकारी दे दीजिए कि procedure usually ऐसे circumstances में क्या है? देखिए, ये मुंबई पुलिस की बड़ी लापरवाही भी है और साथ ही साथ जो आफ्ताब का क्रिमिनल माइंड है उसको भी दिखाता है। सितंबर में जब श्रद्धा के फादर है, उनको ये पता चला कि तकरीबन 2 महीने से श्रद्धा का फोन बंद है। उसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को कंप्लेंट दी और मुंबई पुलिस ने सितंबर में मिसिंग की कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद आफ्ताब को बुलाया, इंट्रोगेट किया और छोड़ दिया, जिसमें आफ्ताब ने बताया था कि वो 22 मई को चली गई है। Okay, we've lost that connection with Arvind. He was detailing the exact sequence of events, the timeline based on which it's clear that for 2 months the Mumbai cops were just squatting on a complaint that was filed by Shraddha's father, and finally November 9th is when they actually approached the Delhi police. And already there are a lot of questions being asked of the Maharashtra police on why they ignored a letter from Shraddha in 2020. This was nothing short of an SOS letter that Shraddha had sent out in November 2020. And politics has also broken out over this. Former Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil, he was then the Home Minister, has trivialized Shraddha's letter. Passing the buck, he said that cops, yes, should have acted on the letter, but he's saying that now the Shinde government to act against the cops who didn't press on, who didn't interrogate that letter further. This comes after the BJP upped the ante against the then Uddhav government for not acting over her complaint. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis stated that if the police had acted in a timely manner, Shraddha's life could have been saved. Then you had BJP's Ram Kadam saying and asking former Chief Minister Uddhav Thackeray to apologize to Shraddha's family. Remember that all of this is based on the complaint letter that Shraddha had sent to the Mumbai police in 2020 November, when she had revealed that there's assault, abuse and death threats that she was receiving from Aftab, even saying in her letter that he had threatened to chop her into pieces. 2 years later, as we all know, tragically Shraddha's worst fears came true, culminating in Aftab's arrest for her gory murder. मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली? तो जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। अशा प्रकारचे अनेक पत्र किंवा अनेक तक्रारी या वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला दिल्या जातात, परंतु पोलीस स्टेशननी त्याचा जो कॉग्निझन्स घ्यायला पाहिजे किंवा त्याच्यावर तातडीने कारवाई करायला पाहिजे। तर ती कारवाई न झाल्यामुळं ही अशी घटना घडली। तर ज्या पोलीस स्टेशनला त्यांनी तक्रार दिली आणि त्याच्यावर कारवाई केली नाही, त्या संबंधितांच्या विरोधामध्ये सरकारने कारवाई केली पाहिजे। श्रीमान उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के नेता श्रद्धा के परिवार की हाथ जोड़ करके माफी मांगे। केवल और केवल इनकी लापरवाही के कारण श्रद्धा अपनी जान गंवा बैठी। उसने लिखी हुई चिट्ठी की यदि जांच होती, उसे गंभीरता से वे लेते, तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। पर चुनावी राजनीति में किसी धर्म के तुष्टीकरण के लिए और वसूली में पूर्णतः उनकी सरकार व्यस्त थी, उस कारण श्रद्धा जान गंवा बैठी।
Now, the Mumbai police has completely defended their actions and justified their response, saying that prompt action was taken and that Shraddha had withdrawn her complaint, and that's why they didn't pursue the matter. इस मामले में जो भी ज़रूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटन स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो The BJP and the AIMIM, meanwhile, have locked horns over the entire love jihad angle that's been spoken about time and again in the course of this investigation. अब जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्ताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? जहर फैल रहा है हमारे समाज में। वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। Taking this back across to Akshay Dongre for more details. Akshay, right now the lens is on the Mumbai police for reportedly a number of lapses that are coming to light right now, that are coming to the fore. But the cops so far maintain that it's not their fault, that they did not ignore the letter sent by Shraddha in 2020 and have cited the fact that she withdrew that complaint. But the reality is that it took a whole 2 weeks for her to withdraw that complaint. And in those 2 weeks, the cops did nothing. Well, that's clearly one of the fault that is coming up now of the Mumbai police. Shraddha filed that, in fact, wrote that letter to the police where she clearly mentioned some very grave things. And the problem is with the approach as well, Akshita, because usually in such kind of cases, the police also tries to, settle the issue. There has been many such instances where issues of domestic violence, when they come up to the police stations, when they come up to the police usually tries to resolve those cases, and that has in fact resulted into several tragedies. Many of these instances can be averted, can be avoided if there is enough action by the police. So there will be certainly a question that what exactly was the Mumbai police doing for the 2 weeks when Shraddha had not taken that complaint back. Why was there no action as far as the police is concerned? Because there was clearly written there that a person is trying to, that her living partner was trying to, in fact threatening to murder her, cut her into pieces. Now that was grave enough, that was serious enough for the police to come into action. They could have taken Aaftab into custody, they could have counseled him if nothing else, and that may have put some sort of fear of law into his mind, and that the tragedy may have been avoided. But to blame just the Mumbai police entirely may also be wrong, because this is what we are talking about, the overall approach of the law enforcement agencies. They also do not have enough resources, enough manpower to the number of cases that come up on daily basis. So certainly the government will also have to look into this. Blaming just the Mumbai police will not resolve this particular issue. And talking about the other angle, love jihad angle that is coming up, it's also a very unfortunate, because as of now,
in this entire investigation, Akshita, police have not been able to find any sort of clue. And it's very important. It's very important to reiterate that the investigation so far hasn't thrown up any sort of love jihad angle. Thanks, Akshay, for joining us with all of those details. And the controversy, the outrage over actor Richa Chadda's comments on the army continues to grow. Filmmaker Ashok Pandit has now filed a complaint against Richa Chadda at the Juhu police station for her Galwan comment. BJP's Ram Kadam has now called for a boycott of Richa Chadda's movies and saying that merely an apology will not work. Ram Kadam has said that banning these kind of films is the right way to punish her and make sure that she learns her lesson. Let's play out for you all the reactions coming in. सुर्खियों में आने के लिए, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? इन्हें हो क्या गया है? एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण? सारा देश चाहता है कि वे हाथ जोड़कर हमारे देश के जवानों की माफी मांगे. So what is this controversy all about? It started with Richa Chadda tweeting, "Galwan says hi," to a comment made by a top army commander about reclaiming POK. To that, she tweeted saying Galwan says hi. It led to obviously endless outrage from army veterans saying that she's mocking the sacrifice of our braves in Galwan and that she doesn't understand the circumstances or what's happened to equate Galwan to POK. And then soon after all of the outrage and with multiple complaints being filed against her, including the latest by filmmaker Ashok Pandit, Richa Chadda posted an apology where she went on to highlight how she comes from an army family background and that she understands the sentiments involved and that's why would never do something that mocks our Jawans. And yet what she's done with that apology is only angered activists as well as filmmakers further who filed that complaint, and they've said that her apology simply doesn't cut it. Mr. Ashok Pandit, filmmaker, is joining us on this broadcast. Mr. Ashok Pandit, you filed a complaint now against Richa Chadda. The argument that many who are backing her now are saying, sir, is that she's apologized. Why the outrage now? You can't kill somebody and then apologize. And if you had little bit of sense, if you had little bit of common sense, you should have not ridiculed or mocked those very soldiers who are protecting you. Whom did you mock? You mocked the soldiers. Soldiers represent India. So you have mocked the country. Apologizing and see the language she is used. She's giving examples of her nanas and mamas and mamis. Didn't she should have thought about her relatives before she tweeted. So the damage has been done. You have in the international fora, in the world, in the country, you have ridiculed a force which protects you and protects the country. Period. So you have to be punished for it. Tomorrow you rape, you kill, you murder, and then you apologize, and you can't get away with it. No? You have to be punished. So that's why I went to the police. I have requested the police. I have told them that the FIR has to be filed against her so that the message goes across. And unfortunately, because of such people, the film industry suffers. The television industry suffers. People invest money in making films. And no, so right now, the BJP, Mr. Ashok Pandit, is saying that the only way to teach Richa Chadda a lesson is by boycotting her movies. Do you agree with that kind of a sentiment? See, no. Boycott it doesn't solve the problem. The problem is, one has to understand, Richa Chadda is only an actress of a film. There are thousands and thousands of people involved in making that film. The producer has invested his money. He is not responsible for such stupid statements of the person who's acted in a film or something like that. That's why the actors have to be more responsible in issuing statements. Who is going to suffer? The person who has nothing to do with Richa Chadda's statement is going to suffer unnecessarily. And today, with that, I would like to say that today I have appealed to the film industry and the television industry. They should come in the open and condemn Richa Chadda's,
statement or her obnoxious statement against the security forces. And if you remain silent, and if you don't talk about it, if you don't condemn, then the backlash has to come to you also. And you have to face it. Okay. Simple as that. All right, Mr. Ashok Pandit, thank you for joining us here on India Today. You filed a complaint against Richard Shraddha, making it very clear that the damage has been done. No amount of apology is going to undo the damage. Let's round up for you all the reactions that are coming in on this big story, because there are many veterans who have also spoken out now against Richard Shraddha's comment. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that Parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. This must be understood by all the countrymen that Indian Defence Forces are in a position to retake this in a very swift and quick operation. If you see that what happened in Galwan, remember that though our 20 soldiers were martyred, but we soldiers were able to kill more than 100 Chinese, and that has surprised Chinese, seeing the raw courage of the Indian soldier. When Chinese soldiers showed aggression against India, Indian soldiers, Indian brave hearts, they gave a befitting reply to China, and China had to suffer heavy losses in Galwan too. This new India is dealing with, having a very proactive approach with regards to, taking, various actions and various scenarios, various strategies are being formed with regard to Pakistan occupied Kashmir. This government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is dealing with the issue of POK with a proactive approach. इनको तो फिल्म एक्ट्रेस जो हैं इनको तो मैं जानता नहीं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इस तरह के कमेंट करना अच्छा नहीं होता. ये इससे इन लोगों को बचना चाहिए. India and Indians respect the army and the armed forces, and when our chief of the army says something, we respect that. It's unfortunate that someone for posting something on the social media decides to mock the army. Is it correct? Do they even understand the valor that was displayed at Galwan by the soldiers who gave up their life fighting for the motherland? It's unfortunate and condemnable to come out with this kind of a post. With that, I'm slipping into a short break here on India Today. Coming up on the other side, we'll be rounding up all the other national stories we're tracking this afternoon. Priyanka Gandhi joining Rahul Gandhi at the Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh. You are watching India Today. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why.
India Today for those who research before reacting. Download the India Today app now. You are watching India Today. Welcome back. Let's get you a roundup of all the other national stories that we're tracking this Thursday. Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and Sachin Pilot joined Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, which is currently in Madhya Pradesh. Days before the yatra hits the desert state of Rajasthan, Pilot has joined the foot march, even as calls for a new CM have resurfaced. After assuming charge of the G20 presidency, India has prioritized 5 issues. These include growth and prosperity, resilient global value chains, MSMEs, logistics and trade reforms under its G20 plan. The Supreme Court has disagreed with the Election Commission on its view that right to vote is a statutory right and not a constitutional one. The court hearing petitions demanding an independent panel for the appointment of ECs. The Assam government has urged the CBI to investigate the firing along the Assam-Meghalaya border that killed 6 people. Conrad Sangma, the Chief Minister of Meghalaya, stated that he was in favour of a federal investigation as well. A group of Meghalayan ministers will meet Union Home Minister Amit Shah to request a CBI probe. As the Shraddha murder case revelations continue to shock the nation, a similar case has been reported in Uttar Pradesh's Sitapur, where a man killed his wife and chopped her into pieces. The suspect, Pankaj Maurya, allegedly confessed to killing his wife, Jyoti. With that, I'm slipping into a short break here on India Today. Don't go anywhere. Coming up on the other side is a special broadcast on the upcoming local polls in Delhi. You are watching India Today.
India Today and I am Poonawala. I am getting you another episode of Ye Delhi Mange More. Today we'll speak with the trading community, a community which has been historically the backbone of the national capital. There are a lot of issues that the traders of the national capital have to speak, and for the sitting councillors, giving answers to what the traders have to say is an uphill task. We'll take you to the bylanes in the national capital to understand what the trading community is asking for and what are the issues for which they will be vote on the 4th of December. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! I have with me the sitting councillor here in Central Delhi, Sandeep Kapoor. संदीप जी, शुरुआत में जानना चाहूंगी, आप सिटिंग काउंसलर हैं, तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। क्या आपके पास ज्यादातर सवालों का जवाब है? देखिए, मेरे पास ज्यादातर सवालों का जवाब है और मैं अपने मुंह से नहीं देखता। मैंने ये बुक छपवाई है 24 पेज की, और अगर आप इसमें देखेंगे एक एक चैप्टर इसमें ऐसा है जिसमें जैसे मैंने क्या यूनिक काम किए। अगर आप देखेंगे, ये मल्टी लेवल पार्किंग है। पूर्वी दिल्ली की पहली मल्टी लेवल पार्किंग किशन नगर में बनी। फिर मैंने बायोमिथेनाइजेशन प्लांट 5 टन का पूर्वी दिल्ली का पहला, वो भी यहाँ बना। फिर मैंने 4 मंजिली स्कूल जो पूर्वी दिल्ली का पहला, वो भी किशन नगर में बनाया। उसके अलावा हमने जितनी स्ट्रीट लाइट है सबको वाइट LED में कन्वर्ट कर दिया। घर घर के अंदर हमने IGL की गैस पाइपलाइन दे दी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमने किए। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर चलते हैं। अब जो कूड़ेदान थे, मतलब पूरे कूड़ेदान कृष्णा नगर से हमने खत्म कर दिए। तो ऐसे इतने बड़े बड़े काम हैं, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमने कृष्ण नगर में बना दिए। अगले 50-60 साल तक जो है वो जनता की सेवा करेंगे। आपने इतना सब बोला, यहाँ महिलाएं भी खड़ी हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगी कि ये जो आम आदमी पार्टी का कहना है, उनका ये कहना है कि 15 साल से MCD के अंदर भाजपा की सरकार रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ निहाल करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी से तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं रखेंगे। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद रखेंगे। जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं संदीप कपूर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्कूल की बनवाई है। आप स्कूलों का अंदर जाके देखिए पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। सड़कें यहाँ की टूटी पड़ी हैं, आज तक उन्होंने नहीं बनाई है। उनसे सीवर के लिए हम बोलते हैं, विधायक जी को बोलते हैं, सीवर के लिए सुनवाई नहीं है। जल बोर्ड में पानी हमारा गंदा आता है, हमें कितनी दिक्कत है। हमें जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो कई मंत्रियों के वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन वीडियो से भी आप लोगों के दिमाग पे असर पड़ रहा है? आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में? हमें तो पहले से ही पता है कि आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार की राजनीति है। अब जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं वो हमें अंदर की खबर तो थी, बट लोगों को नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी असल में क्या कर रही है। वो सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए पैसा, जो जनता का पैसा है, वो इस्तेमाल कर रही है। People are saying from last 15 years BJP ruling the MCD. Why? Because BJP is doing work. People are giving mandate to BJP. That's why BJP is from last 15 years and again coming 5 years BJP will be there. एक और शराब घोटाला हुआ है जो कि गवर्नमेंट की नजर में नहीं है, उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। ये मेरी बराबर में दुकान है, इसके ऊपर इनके सरकारी चोरों ने लाइसेंस बनवा लिया मेरे से बिना रेंट एग्रीमेंट किए, और सरकारी चोरी का 2 गाड़ी सामान मेरी दुकान में पड़ा हुआ है। और इसकी कंप्लेंट में बार बार सरकारी चोरों के मुखिया केजरीवाल को कर रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं है जी। We'll now move on and speak with what the traders have to speak about and the questions that they have for the sitting councillor. Though many say that the sitting councillor has done quite a lot of work, there are still some pain points which need to be discussed. And now we will move on and speak with the traders of what their pain points are. इन्होंने काम किया है अभी तक, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। संदीप जी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे एरिया में, लोगों से मिलते रहते हैं। हम सबको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी भी हेल्प करते रहते हैं, और काफ़ी अच्छा काम पिछले 5 साल में हुआ है। कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि काम जो ना हुआ और जिनके बारे में इन्हें बताना चाहते हैं? ऐसे तो छोटे मोटे काम बहुत हैं जी, लेकिन मेन काम अभी जैसे पार्क में पटरी का निर्माण है, कुछ इस तरह के काम भी थोड़ा सा अभी जरूरत है उसमें। हाँ जी। तो आप क्या इनको आश्वासन देंगे जो ये काम कह रहे हैं पेंडिंग है अभी? देखिए, काम तो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ये पटरी का जो काम है, सड़क का काम है, ये विधायक करता है, क्योंकि उसके बाद बहुत फंड होता है और फंड ये 2-4 चीजों में ही लगाना होता है। लेकिन अब चिंता ना करें, अब जो तीनों MCD है वो एक हो गई है, और MCD जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है। तो अब जो फंड भी हमें मिलेगा, जो विधायक के नकारापन से काम नहीं हुए उन कामों को अब हम करेंगे।
और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत परेशानी है। हाँ। ठेका खुला हुआ है यहाँ पर। हाँ। ये कब बंद होगा? हाँ। एक तो ठेका बंद, और एमसीडी से कोई रिलेटेड सवाल जो है अभी तक कितने काम किए आपने? ये देखिए, सीधा सीधा सवाल है इनका कि इन्होंने कितने काम किए। हाँ। तो ये जो बुकलेट है 24 पेज की, इसमें हर काम मैंने दिखाया हुआ है। और आप देखिए, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग आप देख रहे हो ना बनी है, ये मैंने ही बनवाई। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हो ये बायोमिथेनाइजेशन प्लांट ये मुल्तानी मोहल्ले में बनवाया। देखिए, आपने तो 24 पेज की ये छपवाई है, लेकिन आप एज पार्किंग की समस्या तो अभी भी है। वो तो सुनो, ये तो चीजें रहेंगी, लेकिन हमने सॉल्व करने की तो कोशिश की ना। ये पार्किंग में नहीं जाते, सड़कों पे ही खड़ी कर देते हैं। ये तो लोगों की समस्या। देखो, हमने तो फैसिलिटी दी। सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ का ठेका खत्म होना चाहिए। देखिए, मेन आप समझे कि ये जो शराब का ठेका है आसपास के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म कर देता है। भारत माता की Well, in many places, the sitting councillors are trying very hard to woo the voters once again. We'll now take you to the other campaign trails because the Aam Aadmi Party is putting its full might behind the MCD elections and they want to grab a big chunk. How well are they doing? Are they able to woo the voters is the question that we will be asking those who are now taking part in the Aam Aadmi Party campaign. जुगल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप एक मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं। आपके सामने जो खड़े हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से, वो एक किताब लेके घूम रहे हैं, एक मैनिफेस्टो है, 24 पन्नों की किताब है। उनका कहना है कि वो काम कर चुके हैं और इसी बिना पे जो है लोगों से जाके वोट मांग रहे हैं। वो अपनी जो किताब लेके घूम रहे हैं ना, यहाँ के जल भराव की वो दिखा रहे हैं। जी, मैंने पानी खत्म कर दिया है। जब मैं पैदा हुआ था तब भी जल भराव हो रहा था, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए तब भी जल भराव हो रहा है। वो तो जो फोटो खिंचवा रखी है सब झूठ है। हकीकत आप अभी चलो, मैं दिखाता हूँ। हर गली के बाहर एक कूड़े का पहाड़ है। हर यहाँ पे नालियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। यहाँ पे आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा आतंक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 साल भ्रष्टाचार के नाम पे गिना जाएगा निगम पार्षद जी का। 5 साल ये लेंटर माफियाओं ने, मैं बिल्डिंग अगर जरा सी बन रही है, ये मैं दिखाऊंगा, बिल्डिंगों में जरा सी बिल्डिंग बनती है, निगम अधिकारी लेंटर माफिया वहाँ खड़े होके पैसे मांग रहे होते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ तक कि गरीब आदमियों को भी नहीं छोड़ा गया, रेडी पटरी वालों को नहीं छोड़ा गया, दुकानदारों को नहीं छोड़ा गया। जो रेडी पटरी वाले 100-200 रुपए रोज कमाते हैं, उनसे 50-50 रुपए रेडी लगवाने के लिए गए हैं। बहुत भ्रष्टाचार बीते हैं 5 साल और क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ। एक काम नहीं हुआ आपका कहना है। आपके हाथ में भी यहाँ पे आपने जो है अलग अलग चीजें लिखी हैं जो आप करेंगे। आपने बोला हर घर के बाहर कूड़े का ढेर है, ये जितनी समस्याएं आप लिख चुके हैं। आप चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? मैं चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ रहा हूँ जिन पे काम नहीं किया। मेरे सबसे पहले कूड़े पे लड़ रहा हूँ। हर घर के बाहर एक कूड़े का पहाड़ है। मैं 3 दिन के अंदर, इसमें कोई टेंडर का काम नहीं है कि हम सरकार से टेंडर करेंगे तब कूड़ा उठेगा। ये अधिकारियों का काम है। हमारा हक की लड़ाई है। 3 दिन के अंदर जीतने के बाद कूड़ा मैं एक नहीं रहने दूंगा सड़कों पे, ये मेरा जनता से वादा है। दूसरी समस्या जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। मेरा ये भी वादा है, जो क्षेत्र में जल भराव होता है, मैं यहाँ पे और गलियां जो टूटी हुई हैं, मैं ये गलियां, नालियां जो खराब हैं, इन नालियों को बंद करा दूंगा। क्षेत्र की नालियों को एक पाइपलाइन डलवाऊंगा पूरा। हर 60 फुट पे एक जाली होगी, उस जाली से बड़े नाले में पानी जाएगा और बड़े नाले से पीडब्ल्यूडी के नाले में जाएगा, जिससे कि जल भराव की समस्या भी खत्म हो जाएगी। Do you believe Sandeep Kapoor has done anything? Do you see him? No, he has not done anything from the last 5 years. We are going from door to door and we have seen people don't even know the name of the councillor. They have not even seen face of Sandeep Kapoor. And moreover, they have not even opened any offices where people can put up with their grievances. So where the public can talk and where the public can say कि भाई we are having so much problem. Sandeep Kapoor on the other hand is going about saying that he's got LED lights done, he's got the roads fixed. People are saying no LED light is working. There are LED lights but no light is working. No light is working. No. आप लोगों को लगता है जो वादे किए गए हैं, जो 5 साल के अंदर बोला गया कि ये काम हुआ है, 24 पन्नों की एक बुकलेट लेके गए हैं, सड़कों की बात हो रही है, LED की बात हो रही है, क्या वाकई में पिछले 5 सालों में एमसीडी का जो काम है वो हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। सब जगह देखो कूड़े के ढेर, नालियाँ बंद, गंदी नालियाँ, खड़ा नहीं होया जाता घर के बाहर की ये नालियाँ हैं।
इतना गंद फैलाया है, हमें समझ नहीं आया इसने कैसे किया। तो क्या आपको लगता है कि महिला की सुरक्षा हो, पार्कों की बात हो, ये सब काम हुआ है? जरूरी है, हमारी कोई कुछ भी नहीं किया, ना पार्कों की उन्होंने कुछ किया, लेडीज के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। सड़कें सारी भरी हुई हैं, कूड़ों से भरी हुई हैं, डॉग होते हैं, हम लोग चल फिर नहीं पाते हैं। सीनियर सिटीजन है, जैसे इन्होंने बताया, पैर मुड़ जाता है, सड़कों पर चल रही है, स्कूटी आ रही है, कोई फुटपाथ नहीं बना हुआ कि हम पैदल ढंग से चल सके। हम लोग जो है बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। घरों के आगे इतना कूड़ा है, नालियाँ साफ नहीं है, जगह जगह ना कोई जमादार है, ना कोई झाड़ू मारता, कुछ भी नहीं है, सारी बकवास कर रहे हैं। 15 सालों से बहुत ज्यादा परेशान है। आपको घर के बाहर का कूड़ा उठवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे सफाई कर्मचारी को। अगर पार्क में कोई पेड़ छटाई करवाने हैं, घर के रोडों के पेड़ छटाई करवाने हैं तो RW वाले को पैसे देने पड़ेंगे। पूरे 5 साल इस निगम पार्षद ने भ्रष्टाचार करा है और मैं आपको बता दूं, सिर्फ विकास 2 आदमियों का हुआ है, एक निगम पार्षद का और एक उनके चेले का, और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कार्यालय के नाम पर उन्होंने जनता से दूरी बनाई रखी। कहीं आपने सुना है आज तक के रिकॉर्ड में आपके पास हो कोई निगम पार्षद का कार्यालय नहीं होता? जनता से 5 साल दूरी बना के रखी है, एक कार्यालय नहीं दिया। फोन हुआ तो उठा लिया, नहीं मर्जी हुई नहीं उठाया, 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। We'll take a very short break. Now on the other side, there is a town hall which will take place between the traders and the representatives of the Bharatiya Janata Party, the Congress Party and the Aam Aadmi Party. There will be a face-off where the representatives will have to tell them what they will do for the traders of the national capital. With that, we slip into a very short break. That's what's coming up on the other side. Hello, you're watching Ye Delhi Mange More. I am Aishwarya Paliwal. We come to you from Khar Market, one of the poshest localities in the national capital. The traders here have some points that they would like to ask all the parties. The parties on their part say that they are looking at every possible solution to all the problems. But there are problems galore. आप लोग पार्टी से हैं, आप लोग ट्रेडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिक्कत कर रही हैं. There are many issues which the traders have been talking about for many years. Do you think there are still many problems which need to be solved? I would like to comment here one thing, that Delhi government has tried its level best to stall the smooth functioning of MCD by hampering their funds and by not allowing them to do what they wanted to do, and then coming up and making hue and cry and saying MCD is not working, and we are really upset with the MCD working. Can they explain, can the Delhi CM Arvind Kejriwal ji explain why he has not released the funds which he was supposed to release? All these questions we'll take to Ganendra ji. Ganendra ji, कई सारे इन्होंने जो है आपके ऊपर लांछन लगाए पार्टी के ऊपर. क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए म्युनिसिपल चुनाव जीतना अब की बार आसान होगा? देखिए ऐश्वर्या जी, 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की MCD में सरकार है. 2003 से लेके 2002 से लेके 2007 तक कांग्रेस की सरकार थी. इनसे दुखी होकर, इनके भ्रष्टाचार से दुखी होकर लोगों ने इनको सत्ता दी. 15 साल से लगातार ये सत्ता में है. MCD को लूट के कंगाल कर दिया. MCD बैंक करप्ट हो गई है. MCD के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है. हमने देखा कई बार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाते, डॉक्टर्स जाते, टीचर्स पे जाते, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इनके पार्षद तो मालामाल हो गए, MCD कंगाल हो गई. ये कैसा गवर्नेंस मॉडल है? जो पार्षद कल तक साइकिल पे घूमते थे आज बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं. उनके साउथ दिल्ली में बड़े मकान हो गए, बड़े फार्म हाउसेज हो गए. पूरे का पूरा इनका जो मिस गवर्नेंस का मॉडल है. हम बार पूछ रहे हैं, जब से MCD चुनाव की घोषणा मैं सदन में भी रहा हूँ, अभिषेक जी भी रहे, हमने सदन में भी सवाल पूछा कि भैया काम तो बता दो, क्या काम करा है? सिवाय लूट खसोट के इन्होंने क्या काम करा है? कोई काम ये नहीं बता पाते. The moment you say MCD, first thing that comes into your mind is corruption. Most corrupt department. But the moment you talk about Aap, what comes into your mind? 80 lakh rupees for a ticket. They were supposed to open up mohalla clinics. They ended up opening up a massage center inside Tihar jail. Then the moment the video of massage comes out, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia jumps out saying he's a physiotherapist. But he's a rapist. Someone who's booked under POSCO is presented as a physiotherapist. Do you believe Aam Aadmi Party or the Congress Party can actually give some solution to the problems you are facing? And what are the major problems you are facing? Okay, first of all, with due respect all to the three parties, मिस्टर अभिषेक दत्त शर्मा जी ने अभी एक इल्ज़ाम लगाया सत्येंद्र जैन पे. मैं इनसे पूछूं, आपके एनडी तिवारी साहब क्या कर रहे थे?
उनकी तो वीडियोस भी बाहर हैं। सो एनीवे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे, जेल में नहीं थे। नहीं तो ऐसा गवर्नर नहीं डाल सकते। नहीं, एनडी तिवारी जी ने एमसीडी एनडी तिवारी जी ने देखिए एनडी तिवारी सील करेंगे। आप मुद्दे पे रहिए। नहीं अभी टॉक ऑन फैक्ट। व्हाई एनडी तिवारी? अगर हम लोग यहाँ पे हैं, एक मिनट, अगर आज हम यहाँ पर हैं, ना तो मैं किसी, ना तो नो, हम तो किसी पार्टी के साथ नहीं, मैं तो और भी आ रहा हूँ, मैं तो और भी नहीं, बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी पे, एक मिनट, श्रीकांत त्यागी पे, सो द पॉलिटिकल पार्टीज आर, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि हम लोग जैसे मिस्टर मेहरा भी बोलते हैं ना, हम लोग एक वो क्लास हैं जो कि सफर इन तीनों पार्टियों के हाथ में किया है और शायद हम करते रहेंगे। फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पार्टीज की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती? देखिए ऐसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, every party has got its own agenda. They try to help in such a manner that you don't get any help. And we were talking of the corruption. Corruption has been there for the years together. We have been, put by injections. The corruption, if we talk of Delhi government or we talk of MCD, everywhere the corruption is there. All the three. And but nobody has been able to stop that. I don't know why they have not been able to stop. Especially in public dealing. Especially in public dealing. There is no party corrupt. Someone was making a house in one of the South Delhi colonies. You go for the completion certificate, you're supposed to pay 10 lakh rupees. For what? You go for your architect नक्शा जो पास कराने जाते हो, पास कराना है अभी, वो बिल्कुल सही होता है, उसके लिए 3-4-5 लाख रुपए रिश्वत दो। So basically it is the nexus between the political leaders of the MCD and the Delhi government that all the people have the guts to ask the money for it. आप शिकायत करने चले जाओगे, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे. They will become your biggest enemies and you will be the biggest target for them, how to pin you down or how to put you down. Corruption, according to you, one of the major problems now, corruption is a topic which the traders are talking about. क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी दावे कर रही है, क्या करप्शन को हटाया जा सकता है? कोई ऐसा सॉल्यूशन है? इनका सवाल सीधा सीधा है कि करप्शन क्यों है? देखिए, 2-3 बातें बता दूं। दिल्ली की सरकार ने और हमने अपने मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी कभी फेल नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली एमसीडी में सिंगल विंडो लेके आएंगे। जैसे एमसीडी के जैसे दिल्ली सरकार की 150 से ज़्यादा सर्विसेज डोर स्टेप है। 10766 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करो, 150 से ज़्यादा सर्विसेज आपकी डोर स्टेप आएगी। सेम एमसीडी में हम सिंगल विंडो करने जा रहे हैं। एक टोल फ्री नंबर होगा, किसी को एमसीडी के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, एमसीडी लोगों के घर पहुंचेगी। One second. Let's start from the background. 3 answers, straight answers. Where is Lokpal? Where is Swaraj? And where is right to recall? One side. Second side, his affidavit, which was given in this Vidhan Sabha, 2013-2015 election. I'm talking about 4 straight points. अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतेंगे, पहली चीज 25,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेंगे। दूसरी चीज, लाल बत्ती सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे। तीसरी चीज, बंगला नहीं लेंगे। और चौथी चीज, अगर लोकपाल दिल्ली में लागू नहीं हुआ तो डायलॉग पता क्या था? मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आया हूं मैं तो लोकपाल के लिए आया हूं। मैम, अरविंद केजरीवाल जी हैज बीन just creating a narrative for Delhi that suits politically Aam Aadmi Party. All the 3 parties have hidden agendas. We are fed up. MCD से कंप्लेंट करी, आप कर दीजिए। नहीं जी, हमारे हाथ में नहीं है, ये तो पुलिस के हाथ में है। If you remember, Delhi is such a complex place. I remember going with Mr. Mehra to Madam Sheila Dikshit, may her soul also rest in peace. She had told us, Mr. Shinde को as a home minister मैंने लिखा कि ये administration मेरे हाथ में दे दीजिए। When Congress couldn't give it to Congress, Congress being in the center didn't transfer it to the state. So what do you think? Whatever. See, that she's not there anymore. एक मिनट. I'm just completed. Okay. Mr. N.D. Gupta के घर के सामने बाहर ट्रक्स खड़े होते हैं, क्या उनको नहीं पता? बसेस खड़ी होती हैं, क्या उनको नहीं पता? किस लिए? मैंने कहा एक मिनट, मैंने आम आदमी पार्टी की एमएलए साहब को बोला, मैंने कहा आप एक काम तो कर सकते हैं, इनका लाइसेंस तो कैंसिल कर सकते हैं आप। अगर वो आपको एमसीडी कहते हैं, एमसीडी की प्रॉब्लम है, मान गए, ड्राइविंग लाइसेंस तो लाइसेंसिंग तो आपके हाथ में है ना। ऐश्वर्या, देखिए जितनी भी एमसीडी की रोड्स हैं
उन पे इंक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी का है, चाहे वो व्हीकल का इंक्रोचमेंट हो, चाहे हॉकर्स का इंक्रोचमेंट हो, जो भी इंक्रोचमेंट हो। सुन लीजिए सर, लाइसेंसिंग हमारे पास नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों को अभी ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या सिविक बॉडीज के पास है, क्या हमारे पास है। सुन लीजिए ऐश्वर्या, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दिल्ली के हमने एक नारा दिया है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। सरकार हमारी है, कॉर्पोरेशन में हम ले आओ, आपके पास आपके सारे काम होंगे, सारे काम करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, विधायक हमारे, पार्षद भी हमारा होगा। दिल्ली का स्पीडअप से विकास करेंगे, तेज गति से विकास होगा। और डबल इंजन ही देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सरकार हमारी है, विधायक हमारे, पार्षद हमारा होगा, लोगों के काम होंगे, इनकी पार्किंग की समस्या भी सुलझ जाएगी। एमसीडी वाले जब भी if आम आदमी पार्टी wins, will you solve his problem? इनकी समस्या का समाधान होगा? इनकी नहीं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की 90% जो समस्या है वो सिविक बॉडीज की वजह से है। सिविक बॉडीज हमारे पास आ जाएगी, सरकार हमारी है, हमें काम करना आता है और काम करवाना भी आता है। इनका ये जवाब देना चाहूंगी, कह रहे दिल्ली का हम विकास करेंगे और दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे पंजाब का किया है। नशा मुक्त करने के तो उसको नशा युक्त कर दिया। Many promises. दिल्ली को नशा युक्त कर दिया, ड्राई डेज कम कर दिए, जगह जगह। 1 मिनट भाई साहब, 1 सेकंड भाई साहब, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। आप अपने 5 काम बताइए, आप दिल्ली के 5 काम बताइए, क्या किया आपने 5 काम? आई वांट टू कंप्लीट ऐश्वर्या, आई वांट टू कंप्लीट। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए ना, आप 5 काम बताइए, आप दिल्ली सरकार के 5 काम बताइए, आपका एक भी काम नहीं हुआ है। आप एनडीएमसी चले जाओ, एमसीडी चले जाओ, मैं बता रहा हूँ इतनी करप्शन है, मुझे तो अभी समझ नहीं आता कि पैसा इतना ले लेके क्या करते हैं। I simply said wherever public dealing is there is lot of corruption. There is no relief. सरकार के अंडर है, चाहे वो भाजपा के अंडर है, चाहे वो कांग्रेस के अंडर है। मैम आप वालों को कह रही हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, हम तो ये पूछ रहे हैं, मैम से पूछ रहा हूँ मैं, एमसीडी में आज तक 15 साल में क्या काम किया, हमें बता दें। Some things that you have done. Some things. Definitely, I will definitely tell you the works done by MCD. MCD has made so many reforms. easier online property tax का करा, garbage vehicle आती है, क्यों नहीं किया? देखिए वो you cannot accuse everybody because we have been working on it. BJP let ask them one thing. I'm talking from the traders' point of view, ma'am. What have, ma'am, ask both of them, what have they done for the monitoring committee sealing which happened 3 years back in Delhi, in which more than 3,800 shops, were sealed and more than 1 lakh people went unemployed? He will say it is under center. I want to ask him, what about those roads which were supposed to be marked cleared as cleared, which Aam Aadmi Party has been sitting for the last 8 years? This is traders' issue. What is the answer? I'm telling you, the answer would be what? This is the center is not letting us do. Then leave it. Walk out of it. Okay, you are a normal citizen. Do you believe that the problems, sanitization, parks, those problems can be solved by the political parties? Yes, if they make more effort and if they're very sincere and they're very logical, yes, they can make the difference. It's not just about talking and telling people, because the people are of the city and the parties are just doing what they want to say, what they want to talk and what they want to come up in their manifestos. So being more honest and genuine is the only way any party can solve this problem. So being more honest and genuine is the only way through which these problems can be solved. The traders on one side, the representative of the parties on the other side, but it looks like it will take more than just empty promises for the municipal corporation, at least in the national capital, to be able to come to some kind of a proper solution. I'm wrapping up this show here. I'll see you tomorrow with a new episode of Ye Delhi Mange More. Armed with facts, she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today.
Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Artificial intelligence, or AI, is the science of programming machines or computers to reproduce human processes like learning and decision making. Recent technological advances, for example, intelligent algorithms which decide autonomously what actions to take to achieve their objective, have seen AI take great strides forward, creeping steadily into our daily lives. Smartphones are getting smarter, cyber assistants can find information in the blink of an eye, and autonomous vehicles could soon increase road safety, potentially eliminating the risk of human error. AI offers the promise of a highly efficient world in which robots take care of our sick, stock our fridges, plan our holidays, and do hazardous jobs humans should not or will not do. Game playing is a crucial measure of AI progress, proving that a machine can execute certain intellectual tasks better than humans. Computer mastery of chess and more recently Go, the ultimate board game, have been hailed as moments in humanity's quest to create smart machines. In medicine, software can already diagnose illnesses, including some cancers, as efficiently as a real doctor. But the issue of how to adapt workforces to cope with this fourth industrial revolution has economists and policymakers scratching their heads. Millions of jobs could be threatened as robots become capable of nearly everything humans do. There are concerns that if left unchecked, the development of superintelligence could pose a threat to humanity, with computers outsmarting and outmanipulating humans. There is a generational battle going on. Rahul Gandhi's generation, and you can tell me this, Dipinder, seems to want a different kind of politics. He has his own vision. Absolutely. His commitment towards the Congress ideology, towards the constitutional values of our country. And that's the reason why we see him as our future leader and our leader of our party today. Why is it that so many people have left in recent time, including from Bhupinder Singh Huda's generation and yours? And there's a sense that is the Congress a sinking ship? And y'all have only stayed back because finally y'all have been given control of Haryana once again, and there's an election 2 years from now. Otherwise even Hooda Saab would have left or Dipinder would have left. Not true? No question. At no stage did you think of leaving? I don't think. Presented by Only OLX Autos gives the best price for your car. Co-presented by Macho Hint, Fashion Bade Aaram Se. Powered by Ashirwad Shubh Chakki Aata, Raho Char Kadam Aage. You are watching India Today. A big story that we've been tracking through the day today after we first broke it. Delhi's famous Jama Masjid has put out an appalling sexist diktat. You won't believe it. Let's just tell you the details. Women, without being accompanied by men, are no longer allowed to enter the Jama Masjid. Solitary women or women in groups will not be allowed entry into one of the world's most famous mosques situated in India's national capital. In order to gain access to the Jama Masjid complex,
The authorities now say women need to be accompanied by a male member of their family. The diktat by the Jama Masjid management has triggered, as you might expect, huge outrage. The Delhi Women's Panel is sending a notice to the Jama Masjid management as we speak. As far as the Jama Masjid issue is concerned, whatever the Imam Sahib of the Jama Masjid has issued instructions regarding the people going to see or do prayer or offer namaz in Jama Masjid, it is as per the Shariat, and you all know, all people know that all places of worship are basically for worshipping, and Masjid is also to offer namaz. So the sanctity of the masjid must be maintained. एक तरफ भारत सरकार जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की नीति पर आगे बढ़ करके प्रत्येक बेटी को सबल, सक्षम, निर्भीक और स्वावलंबी बनाने के लिए लगी हुई है, तो वहीं ये इस्लामिक जिहादी तत्व जो है उन बेटियों को, जिसको ये धार्मिक स्थल कहते हैं, ऐसी जामा मस्जिद में प्रवेश से प्रतिबंधित कर रहे हैं। देश की राजधानी के अंदर वो भड़काऊ भाईजान कहाँ हैं भाग्यनगर के, जो कि ये सपना पाले बैठे थे कि बुर्का नसीन कोई बहन जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे उनको पहले मस्जिद में तो प्रवेश दिलवा दो। It's totally un-Islamic, first of all, because it's always there that women have been given a special priority, that even if you cannot control someone if they want to offer